Hello. Hello, good afternoon, students. Uh, in last lecture, we have seen what is MapReduce. We have seen these slides also with these diagrams you can see on the screens. We have seen one real life example also. We have seen what is input, split, mapping, shuffling, reducing. After that, we have seen, just give me a minute, and we have seen this real life example for counting the population. And in today's lecture, let's start with the today's point, that is map reduce task and job. Okay, now you know very well that in map function mappers are going to be work, and in reduce function reducers are going to be work. So after map function only the reduce function can able to work. Now you know this very well. Now before after this, okay, after this, what exactly a map reduce is handling its task and its jobs, that is we are going to see in today's lecture. So MapReduce is the core component of Hadoop that process huge amount of data parallel by dividing the work into a set of independent tasks. In MapReduce, data flow is step by step from mapper to reducer. ओके जो डेटा फ्लो है वो किस तरीके से रहेगा, मैपर टू रिड्यूसर. वी आर गोइंग टू कवर हाउ हडूप MapReduce works internally. Now in this topic we are going to be see what are the tasks to complete and which is the job to cover. So the runtime support for execution of MapReduce job comprises the collection of services that deals with scheduling and executing MapReduce task. These are MapReduce scheduling service and MapReduce execution service. ओके सो ये जो रन टाइम सपोर्ट है, ओके जो जॉब को कलेक्शन ऑफ सर्विसेज के लिए लगेगा और फिर कुछ टास्क की शेड्यूलिंग के लिए जो भी कुछ रन टाइम सपोर्ट लगेगा वो कौन देगा, MapReduce सर्विस एंड MapReduce execution service. These two services integrate with existing services of the framework in order to provide what? Persistence, application accounting, the features available for application developed with programming models. So these services you can get from MapReduce scheduling service and MapReduce execution service. Okay. The scheduling of jobs and tasks is the responsibility of the MapReduce scheduling service, which cover the same role as master process in Google implementation. Do you know what is the master process? What master is doing? Name node handling by the master nodes. Okay, so that you have to keep remember for last, that with masters name nodes are there and with slave nodes data nodes are there. Okay, the architecture of scheduling service is organized in two major components. Okay, MapReduce scheduler service जो टास्क के लिए रहेगी and MapReduce scheduler. Okay, Hadoop MapReduce data flow will provide you the complete MapReduce data flow chart in Hadoop. Okay, in today's lecture we are going to be see the phrases of execution while if any MapReduce function is in execution, then which are the phrases will comprises: input file, input format, Hadoop input splits, record reader, mappers, combiner, partitioner, shuffling, sorting, reducer, record writer and output format in detail. ये सब कुछ जो पॉइंट्स है जो अभी आपको बोल्ड पे स्लाइड्स पे दिख रहे हैं ये आपको डिटेल करने हैं, बिकॉज दीज आर द पॉइंट विच कंप्राइजेस विद द टास्क एंड जॉब ऑफ Hadoop MapReduce. ओके, यहाँ पे आपको वो सारे पॉइंट्स दिखेंगे. फर्स्ट डायग्राम का नाम क्या है, MapReduce जॉब एग्जीक्यूशन फ्लो. Okay, so in this flow what you can see with me, you can see first
डेटा इज स्टोर ऑन HDFS, जो भी हम लोगों ने हडूप पे डेटा स्टोर करके रखा है. फिर रेड कलर में इनपुट फॉर्मेट, देन ऑरेंज कलर में इनपुट स्प्लिट, जो भी इनपुट है उसको स्प्लिट करेंगे. फिर स्प्लिट करके नहीं होगा तो उसको हम ब्लू कलर में देखो रिकॉर्ड रीडर वहाँ पे रहेंगे रीड करने के लिए. देन रेड कलर का जो मेन फंक्शन है वो मैपर है. ओके, रिकॉर्ड रीडर होने के बाद जो है वो क्या रहेगी, की वैल्यूज़ और पेयर्स में उनको हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे. इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर जो है वो काउंट करेगा मैपर. देन पैरेट ग्रीन कलर में कंबाइनर, येलो कलर में पार्टीशनर. In between the combiner and partitioner, you can see whatever the key value pair they are clubbed with the mapper, they are going to be replaced with substitute by increasing the frequency. Okay, and then blue color में shuffling and sorting functions. Then again arrow orange color में reducers, red color में output format, and then final output. Okay. Very simple diagram is there. As you read this all bold function, all bold names on the slide, that is input, input file, input format, ये सब पढ़ने के बाद एक बार आपको डायग्राम परफेक्टली सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल पॉइंट. देन जॉब टास्क एंड शेड्यूलिंग कौन कर रहा है, यानी कि अभी देखो बहुत सारे जॉब्स है तुम्हारे पास, बहुत सारे टास्क है. ओके, तो जो ये इनका शेड्यूलिंग रहेगा ये कौन करेगा, एप्लीकेशन मास्टर चेंजेस द स्टेटस फॉर द जॉब टू सक्सेसफुल. ओके, ये जो एप्लीकेशन मास्टर रहेगा इट इज़ गोइंग टू बी मॉनिटर दैट स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर जॉब और टास्क, एप्लीकेशन मास्टर. ओके, so that last task for the job is to complete, he will be monitoring. Then it learns that the job has completed successfully when the job polls to the status. ये सब शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहती हूँ. सब कुछ जो मॉनिटर करेगा जॉब एंड टास्क, इनका शेड्यूलिंग ये मास्टर करेगा. कौन करेगा, एप्लीकेशन मास्टर करेंगे. सो a message written from wait for completion method after it prints a message to tell user about successful completion of the task. क्या होगा, ये सक्सेसफुल मार्क करेगा. ओके, नाउ मैप प्रोड्यूस टास्क ट्रैकर्स. दिस वन इज द अनदर पॉइंट. ओके, in next lecture we will start with this task tracker. Okay, fine.